नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। झारखंड में पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी, 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे राहुल गांधी। गुजरात के शुक्ल तीर्थ में फिर एक बार बड़ी दुर्घटना, नर्मदा नदी में डूबे 3 लोग। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर विभिन्न आयोजन, दिखी आदिवासी संस्कृति की विशेष झलक। चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी की खबर सामने आई, जिससे राहुल गांधी को भी 1.5 घंटे रुके रहना पड़ा। झारखंड के देवघर में आज शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा और बाद में दिल्ली से दूसरा प्लेन मंगवाकर प्रधानमंत्री को यात्रा करवाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति एसपीजी द्वारा नहीं दी गई, जिससे प्रधानमंत्री को अपने ही प्लेन में ही बैठा रहना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीनियर पायलट ने जैसे ही तकनीकी खराबी की जानकारी दी तो पीएमओ ने कोऑर्डिनेट किया और दिल्ली से वायुसेना का विमान देवघर रवाना कर दिया। वहीं झारखंड की गोंडा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक रुका रहा। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से गोंडा के बेलबड्डा से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और मोबाइल देखते रहे। महागामा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस कैंडिडेट दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ इसीलिए रोका गया था कि प्रधानमंत्री देवघर में हैं। राहुल गांधी को उस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल है जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर शासन किया और किसी भी विपक्ष नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई। यह स्वीकार्य नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री का विमान खराब होने की वजह से राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। गुजरात के भरूच के शुक्ल तीर्थ में नदी में नहाने गए हुए 3 लोग पानी में डूब गए, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। गुजरात के भरूच में प्रसिद्ध तीर्थ धाम शुक्ल तीर्थ है, जहां से नर्मदा नदी बहती है। यहाँ नदी में कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन नहाने गए 3 लोग पानी में डूब गए, जिनमें से एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि 2 लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। भरूच के वेजलपुर इलाके में रहने वाले पिता पुत्र पानी में डूब गए हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। कल भी सूरत के एक युवक की नदी में डूबकर मौत हुई थी। शुक्ल तीर्थ में इन दिनों मेला चल रहा है और मेले के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां उमड़ रहे हैं और नदी में गहरे पानी में नहाने की कोशिश में कई लोग अप्रिय घटनाओं का भोग भी बन रहे हैं। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया के राजपारडी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती विधायक की उपस्थिति में मनाई गई। गुजरात के भरूच के कई इलाकों में आदिवासी लोगों की काफी बड़ी जनसंख्या है, जो बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं। इसी के तहत झगड़िया के राजपारडी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के मौके पर विधायक रितेश वसावा की उपस्थिति में जन्म जयंती
का खास आयोजन किया गया। इस मौके पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया गया। मौके पर आदिवासी समाज के अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। बिरसा मुंडा भगवान की जन्म जयंती के मौके पर आदिवासी अग्रणी छोटू वसावा ने आदिवासी समाज के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। आज भारतना महाजननायक बिरसा दादा ने 150મી जन्म जयंती प्रसंगे देशना आदिवासीओ अने जे पछात जातिओ छे एमने संदेशो आपवा मांगु छुं के बिरसा दादा अंग्रेजो सामे लड़ीने 25 वर्षनी उंमरमां एमने जे हत्या करवामां आवी छे एना माटे जे जिम्मेवार लोको छे एमने ओळखीने जे बिरसा दादाए जे धरती आबा कहेवाय एमणे जो जे प्रयास कर्या छे एमने जे पोतानो जान नोछावर कर्यो छे ए जन्म जयंती ने आपणे बिरदावीए छीए। एमने खूब खूब अभिनंदन आपीए छे कि आटली नानी उंमरनी अंदर देशना लोकोने देशने स्वतंत्र बनवा माटे हमारा देश में हमारू राज ए जातनी वात करीने देश अने गामनी अंदर पण गामना लोकोनुं राज छे अमारू गाम अमारू राज ए सूत्र ज्यारे एमने आप्युं होय तो आ देशना लोकोए पण गाम सभाओ बनावीने पोताना हक अधिकारनी मागणी करवी जोईए। आ सरकारना जे वडा छे ते ज्यारे झारखंडनी अंदर चूंटणी समये जईने बिरसा दादानी प्रतिमाने पूजता होय एमनी माटी लईने चढ़ावता होय तो मारे एमने कहेवुं छे के आटला महान पुरुषनी वात ज्यारे तमे करता होय तो तमे एमने भारत रत्न आपो ने शा माटे नथी आपता मारे एम कहेवुं छे। एटले एमने भारत रत्न आपीने तमे एमनी जन्म जयंती उजवो तो अमे मानीए के ना कंईक सरकारने आदिवासीओनी ने आवा महान जे जननायक छे एमनी लागणी छे एवुं मानवाने कारण उभुं थाय। गुजरात के बोडली के अलीपुरा 4 रास्ता पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर संविधान बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। छोटा उदयपुर के बोरडेली में अलीपुरा 4 रास्ता निकट प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति, समस्त बहुजन समाज और समस्त आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली समेत के आयोजन किए गए, जिसमें आदिवासी समाज के अग्रणियों और लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। जय भीम जय आदिवासी के नारों के साथ यह रैली अलीपुरा के मार्गों पर घूमी। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर लोकार्पण किया गया। आज बिरसा मुंडाजीनी 150મી जन्म जयंती निमित्ते बोडेली अलीपुरा खाते आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा जे छेल्ला 3 वर्षथी अगम्य कारणोसर जग्याना अभावना कारणे जे बिरसा मुंडाजी बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमाનું प्रस्थापन नहोતું કરવામાં આવ્યું એ આજે લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ अलीपुरा ग्राम पंचायत जूथ ग्राम पंचायतना सरपंच श्री गंगाबेन विठ्ठलभाई अने डेप्यूटी सरपंच श्री सतीशभाई अने समग्र सदस्यों अने गामना अग्रणीओ गामना समाजना अग्रणीओ तमाम आगेवानोनी रूबरूनी अंदर आजे खूब उत्साहपूर्वक बाबा साहेब भीमराव आंबेडकरजीनी प्रतिमानुं अनावरण करवामां आव्युं। आ तबक्के खूब लोकोए उत्साहमां रेलीमां भाग लीधो अने समग्र समाज एक छे एवो एक पर्चो बताववामां आव्यो अने भीमराव बाबा साहेब आंबेडकरनी प्रतिमामां जे लोकोए सहकार आप्यो तमाम लोकोनो अमे आजे आभार मानीए छीए। आज बोडेली शहरनी मध्यमां अलीपुरा ग्राम पंचायत नी हदमां बिरसा मुंडाजी भगवाननी बाजुमां
ડૉક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરજીની મૂર્તિ પ્રતિમાનું જે અનાવરણ કર્યું, એક તમામ સર્વ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા અને ખૂબ હર્ષો ઉલ્લાસથી આ પ્રસંગને ઉજવ્યો. અને તેમાં સર્વ સમાજના, બહુજન સમાજના, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના, વડોદરા જિલ્લાના, નર્મદા જિલ્લાના તેમજ પંચમહાલ જિલ્લાના ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો આવ્યા. અને બોડેલી શહેરમાંથી પણ જુદા જુદા સમાજના લોકો આવીને આજે બોડેલી શહેરમાં સામાજિક સમરસતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડ્યું છે. તે બદલ હું ખૂબ ખૂબ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. गुजरात के सूरत में पालिका के नशे में धुत कर्मचारी ने बड़े सड़क हादसे को अंजाम दिया। सूरत के अड़ाजन में भूमि कॉम्प्लेक्स निकट सूरत महानगर पालिका के अधिकारी ने अजीबोगरीब हादसे को अंजाम दिया, जिसमें पालिका के 8वां जोन में कार्यरत नीलांग गायवाला ने बेकाबू रूप से कार चलाते हुए कार को डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दिया। नीलांग गायवाला पालिका के 8वां जोन में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में ड्यूटी करते हैं। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और हादसे को अंजाम देने वाले सूरत महानगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर नीलांग गायवाला को पकड़ लिया। इसी बीच अधिकारी के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें लोगों से बचाया। परिजनों ने कार से सूरत महानगर पालिका लिखा हुआ बोर्ड भी हटा दिया। घटना की जानकारी पाकर अड़ाजन पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले पर कार्रवाई की। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के खंडेराव मार्केट निकट स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। वडोदरा में खंडेराव मार्केट निकट नानकवाड़ी गुरुद्वारा है, जहां गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश वर्ष उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। श्री गुरु नानक देव जी की 556वीं जन्म जयंती के मौके पर गुरुद्वारा नानकवाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी का निरंतर अखंड पाठ किया गया और कीर्तन भी किया गया। इस मौके पर पालकी यात्रा, प्रभात फेरी जैसे आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कालयुगना अवतार सिख धर्मना स्थापक धन धन श्री गुरु नानक देव जी ना पवित्र पावन 556वां प्रकाश निमित्ते श्री गुरु नानक साहेब जी ना पवित्र पावन चरण स्पर्श एवं ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकवाड़ी खंडेराव मार्केट वडोदरा खाते आज दर वर्षनी जेम समूह साथ संघना सहयोगथी भव्य श्रद्धापूर्वक उजवणी करवामां आवी रहेल छे अने छेल्ला 4 ऑक्टोबरथी श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी ना श्री खाटपाट साहेब नो प्रवाह चालू हतो, जे आज सवारना पूर्णावती थયેલ છે। श्री गुरु नानक साहेब जी नो निरालो पंथ छे। कीर्त करो, नाम जपो, वंड शको ने सौ मानव जात ने प्रेम करनारो अनेरो एक पंथ छे ने गुरु महाराज नी कृपा दरेक ने मळे अने अमे नफरत भूली जाइए अने शांति ने भाईचारा थी अमारो समाज आगळ वधे एना माटे हालमां कलयुगनी अंदर श्री गुरु नानक साहेब जी नो आ पंथ खूब उपयोगी छे अने श्री गुरु ग्रंथ साहेब सर्व धर्मनो एक मात्र प्रतीक है। आखी दुनिया अंदर एनो प्रचार प्रसार थई रहेल छे अने आप नगरजनों ने आ भव्य कार्यक्रम दरमियान आपने श्री गुरु नानक देव जी ना महान प्रकाश पर्वनो खूब खूब अभिनंदन अने आप सौ पण अहींया आवीने प्रसादीनो अने दर्शननो लाभ मेळवा माटे अमे आपने अभिनंदन पाठवीए छीए। मानव कल्याण अर्थे गुरु का लंगर भी चालू छे अने ब्लड डोनेशन बैंक पण मानवना ये भला माटेनु एक कार्य चाली रहेल छे ने सौ नात जात वगैरह अहींया मोटी संख्या में भाविको दर्शननो लाभ लई रह्या छे। आप सौने खूब खूब अमे भावपूर्वक आमंत्रण आपीए छीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरात के वडोदरा में देव दिवाली के पावन अवसर पर भगवान नरसिंह जी की 228वीं शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। देव दिवाली के मौके पर वडोदरा में हर वर्ष भगवान नरसिंह जी की तुलसी जी के साथ शादी रचाने की परंपरा है, जिसके तहत आज सुबह से ही भगवान नरसिंह जी के मंदिर में धार्मिक आयोजन किए गए हैं, जिसकी तिलक विधि में सुबह से ही बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए हैं। भगवान नरसिंह जी की पाल को खूबसूरत रूप से सजा दिया गया है। आज सुबह से ही मंदिर में भगवान की तिलक विधि जारी है और शाम 5 बजे भगवान की शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। आज रोज कार्तिक सुद पूनम एटले के आखा वर्ष में आवती एक ज एवी पूनम ज्यारे तुलसीवाड़ी में 3 ठाकुरजी बिराजता हता, तेमांथी एक ब्राह्मण ने आप्या हता, एक वैष्णव ने आप्या हता अने त्रीजा जे हता ते तुलसीवाड़ी हता। हवे ए तुलसीवाड़ी ज्यां आगळ बावाश्री તેમની પૂજા કરતા હતા તે વખતે બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ ને બધા ત્યાં મળીને ત્યાં ભજન કીર્તન કરવા જતા હતા। તે ભજન કીર્તન કરતા કરતા તેમને તબિયત વધારે બગડી ત્યારે તેમને એવું ભગવાને પ્રભાવ આપ્યો કે ભાઈ તમે એક બ્રાહ્મણની ત્યાં આપો મને અને એક વૈષ્ણવની ત્યાં મારી સેવા કરવા પધરાવો। ત્યારે તેમને કહ્યું કે આ વર્ષે મારી સમાધિ પર કાર્તક સુદ પૂનમના દિવસે ઠાકોરજીને લઈને અહીંયા તુલસીવાડી લઈને આવવા, મારી સમાધિ પર બેસાડી તેમને ભોગ ધરાવો અને આખા વર્ષમાં તેમને સુખડી એટલે કે નરસિંહ લોટ ધરાવો અને એક અખંડ દીવો રાખો। તે આ કાર્તક સુદ પૂનમના દિવસનો મહિમા છે। भगवान नरसिंह जी की बारात के लिए पालकी को सुंदर रूप से सजा दिया गया है। प्रबोधिनी एकादशी के मौके पर नरसिंह जी के मंदिर के परिवार के सदस्यों ने तुलसीवाड़ी पहुंचकर शादी का न्योता भी दिया। नरसिंह जी भगवान की यह शोभा यात्रा एमजी रोड मांडवी से निकलकर चापानेर दरवाजा, अडानिया पुल,
चार रास्ता, फतेहपुरा चार रास्ता, कुम्हारवाड़ा नाका, मंगलेश्वर झापा और तुलसीवाड़ी होते हुए तुलसी मंदिर तक पहुंचेगी और रात 11 बजे भगवान नरसिंह जी की तुलसी माता के साथ शादी रचाई जाएगी। કાતક સુદ પૂનમને આજે અત્યારે ચાલા વિધિ સંપન્ન થઈ રહી છે. 12 મહિનામાં એકવાર ભગવાનનો ચાલો કરવામાં આવે છે. સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ચાલા વિધિ ચાલે છે. ત્યારબાદ ઠાકોરજીને પાલખીમાં પધરાવવામાં આવે. ત્યારબાદ પાલખી તુલસીવાડી પાલખી જાય એટલે દરબારના ધક્કેથી માડવી લઈએ ને તુલસીવાડી બિરાજમાન થાય છે. રાત્રે 11 વાગે તુલસીવાડી બિરાજમાન થાય. 4 વાગે તુલસી વિવાહ થાય. તુલસીવાડીથી કાર્ય સંપન્ન થઈ જાય. ત્યાર પછી પાલખી પાછી વળતા માંડવી 5 વાગે આવે. સવારે 7:30 મંદિરે પાલખી બિરાજમાન પાછી થાય છે. ત્યારબાદ ચાલા વિધિ સંપન્ન થાય છે. ભાવિ ભક્તોને ભાવપૂર્વક आमंत्रण। गुजरात के अमरेली के जाफराबाद में मछली के मंडप में आग लग जाने पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गुजरात के अमरेली में जाफराबाद में आग लगने की घटना सामने आई, जहां पीपली कांठा तलावड़ी के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। शिप के लिए स्टॉक किए गए डीजल भरे हुए बैरल और गैस की बोतल फटने पर आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसमें 3 जितनी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग लगने पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी पाकर जाफराबाद मरीन पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। જાફરાબાદ નગરપાલિકા વિસ્તારની પાસે આવેલા એક મચ્છી સૂકવવાના એક સ્થળ છે કે જ્યાં માછલીને સૂકવી અને તેની પ્રોસિજર કરવામાં આવતી હોય છે, જેની અંદર અચાનક આગ લાગવાની ઘટના બનેલી હતી, જેની ટેલિફોનિક જાણ અમરેલી ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના કંટ્રોલ રૂમ ખાતે કરવામાં આવેલી હતી। આ જાણ થતાની સાથે જ ત્યાં બ્લાસ્ટિંગના સમાચાર હતા, જેથી કરીને તાત્કાલિક ધોરણે આસપાસમાં આવેલી L&T કંપની તેમજ સિન્ટેક્સ કંપની અને રાજુલા ફાયર સર્વિસની ગાડીઓને ત્યાંથી રવાના કરવામાં આવેલી હતી, તેમજ અમરેલીની ટીમ પણ હાલના તબક્કે આ સ્થળ પર આવી ગઈ હતી। આ સમયગાળા દરમિયાન ગેસના 2 સિલિન્ડરો બ્લાસ્ટ થયેલા છે અને 3 જેટલા આ મચ્છી સૂકવવા માટે રહેતા જે લોકલ વ્યક્તિઓ હોય તેઓના ઝૂંપડાઓ બળી જવા પામ્યા છે। હાલના તબક્કે સંપૂર્ણ આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવેલો છે અને સદનસીબે આ દુર્ઘટનાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થવા પામેલી નથી। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर वर्ष दिवाली के बाद स्नेह मिलन समारोह का आयोजन नव वर्ष के उपलक्ष्य में किया जाता है, जो इस वर्ष भी कमाठी बाग में किया गया। दिवाली के बाद सभी जनप्रतिनिधि एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे, इस आशय के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस स्नेह मिलन समारोह में वडोदरा के प्रथम नागरिक मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, कॉरपोरेशन के अधिकारी और कॉरपोरेटर उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व सांसद रंजन मेन भट्ट और पूर्व मेयर जिगीशा सेठ समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। इस स्नेह मिलन समारोह में कांग्रेस के नगर सेवक भी शामिल हुए। આપણી પ્રણાલિકા પણ રહી છે ને પરંપરા પણ રહી છે, અને જેના જે વિચારની પાછળ જેવી રીતે દિવાળીના તહેવારોમાં પ્રત્યેક પરિવાર સૌ સભ્યો એકબીજાને હળી મળી અને નૂતન વર્ષ નિમિત્તે શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે, તો સાથે સાથે નવી પેઢીને જૂની પેઢીના સૌ વડીલોના આશીર્વાદ તો મળે જ છે, પરંતુ આગળના પોતાના જીવનમાં કપરા સમયમાં કેવી રીતે કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો, એટલે કહી શકું કે એમના અઢળક અનુભવનું જે ભાથું છે એનાથી પણ નવી પેઢી સમૃદ્ધ થતી હોય છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં પણ આ એક પરંપરા રહી છે કે જેમાં વર્ષોથી વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સર સયાજીરાવ સભાગૃહમાં જે સૌ સભાસદશ્રીઓ જે પોતપોતાના વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તે પોતાના વિસ્તારના વિકાસ માટે કે પછી નાગરિકોની સમસ્યાઓના પ્રશ્નો
અને પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે અને સમસ્યાઓના નિવારણ માટે ત્યાં પૂરેપૂરી પ્રતિબદ્ધતાથી સૌ સાથે મળી અને દરેક કાઉન્સિલરશ્રીઓ પોતાના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. હું આજના અવસર પર આપ સૌને નવ વર્ષ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. સ્નેહ મિલનનો મુખ્ય આશય લોકોમાં ઉત્સાહનો સંચાર થાય, કોર્પોરેશનની એકતા અને સંગઠિતતામાં વધારો થાય અને લોકો પોતાના હોદ્દા ભૂલી અને એકબીજાને માન સન્માન આપે. કાર્યકર્તાઓ આજે પોતાના હોદ્દા અને પોતાના સ્ટેટસને ભૂલી અને એકબીજાના ગળે મળતા હોય છે, એકબીજાને શુભેચ્છાઓનું આદાન પ્રદાન કરતા હોય છે અને પૂર્વ નેતાઓ છે એ લોકો સાથે પણ મનમેળ થાય અને એમના વિચારોનું આદાન પ્રદાન થાય અને અધિકારીઓ જોડે પણ કાઉન્સિલરોનો ગૌરવ વધે, એમની વચ્ચે કોર્ડિનેશન વધે. એ આશયથી આ સ્નેહ મિલન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેથી કરીને જે પૂર્વ કાઉન્સિલરો છે, પૂર્વ હોદ્દેદારો છે, એ લોકો પણ જે વર્તમાન હોદ્દેદારો છે, વર્તમાન કાઉન્સિલરો છે, એ લોકો જોડે મળી શકે, એકબીજાને શુભેચ્છાઓ આપી શકે અને એક મુક્ત વાતાવરણમાં આ ડિનરનું આયોજન કર્યું છે. સૌને નવા વર્ષની શુભેચ્છા આપું છું. તમામ માટે આવનારું વર્ષ જે 2081 વિક્રમ સંવત છે અને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપનારું બને. તમામ લોકો યશ કીર્તિ કમાય અને વડોદરા શહેરમાં પોતાનું સક્રિય યોગદાન આપી અને વડોદરાને એક વિકસિત વડોદરા બનાવવા પોતાનું યોગદાન આપતા રહે એવી શુભેચ્છાઓ આપું છું. गुजरात के वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर संघ के चुनाव पर चर्चा की गई. 4 से 6 दिसंबर तक पश्चिम रेलवे के 6 विभाग यानी मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, रतलाम और भावनगर में सीक्रेट बैलेट चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया गया है, जिस पर चर्चा के लिए वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग की सभी कैटेगरी के करीब 800 से ज्यादा रेल कर्मी शामिल हुए. मीटिंग में महामंत्री आरजी काबरा, अध्यक्ष शरीफ खान पठान, मंत्री तपन चौधरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महामंत्री डॉक्टर एम रघवैया उपस्थित रहे. અમે 12, 13, 14 તારીખે હું અને મારા સાથી ભાઈ કાબરજી ઉજ્જૈન ગયા. ઉજ્જૈન મહાકાલજીના દર્શન કરીને પછી ઉજ્જૈનમાં મીટિંગ મોટી કરી. ઇન્દોર ગયા, ઇન્દોરમાં મોટી મીટિંગ પ્રેસ એડ્રેસ કર્યું. રતલામ આવ્યા, રતલામ ડીઝલ શેડ પર કમસે કમ 300-400 એમ્પ્લોયની મીટિંગ સભા એડ્રેસ કરી. WRMS ઓફિસ રતલામમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ એડ્રેસ કરી ભાઈ કાબર અને મેં. અને ગઈકાલે દાહોદ હતા, દાહોદમાં મોટી મીટિંગ, દાહોદ વર્કશોપના ગેટ પર, એમાં ભારી સંખ્યામાં કર્મચારી ઉપસ્થિત હતા. હું કહેવાય એ આજે અહીંયા સભા કરી, એમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં કર્મચારી છે. કાલે અમે ગોધરા અને આણંદ જઈશું. એટલે આ કેમ્પેન સિક્રેટ બેલેટ ઇલેક્શન જે 4, 5, 6 તારીખે થવાનું છે ભારતીય રેલો પર, એના ભાગરૂપે અમે વેસ્ટર્ન રેલવેમાં કે જ્યાં જ્યાં અમે ગયા ત્યાં ભારી સંખ્યામાં કર્મચારીનો જુવાળ, હું એક્ઝેગરેશન નથી કરતો, કર્મચારી ભારી સંખ્યામાં વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ આની સાથે એમની રીતિ, અમને કામ કરવાની એમની અમારી જે ક્લીન છબી છે એને લઈને કર્મચારીઓ ભારી સંખ્યામાં અમારી મિટિંગોમાં આવ્યા છે. આજે બી આપણે જોયું કે ભારી સંખ્યામાં કર્મચારી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એટલે લોકોનું હું કંઈ કહેવા નથી માંગતા બીજા લોકોનું, પણ એમની જે છબી અને અમારી જે છબી છે, ક્લીન છબી છે, ડોક્ટર રાઘવૈયાજીની છબીને કોઈ ચેલેન્જ નહીં કરી શકે. અમારી કોઈ છબીને કોઈ ચેલેન્જ નહીં, કોઈ ડાઘ નથી, કોઈ જાતનું કોઈ ગડબડ નહીં. પૂરી ભારતીય રેલો પર 13 લાખ ને કંઈ 50,000 કે એવા કર્મચારી વોટિંગ કરશે સિક્રેટ બેલેટમાં. અને એમની સાથે જે રહ્યા છે અને વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ NFIR, બધા ઝોનમાં NFIRનો બોલબાલા છે, કેમ કે રાઘવૈયાજી જે પ્રમાણે કામ કરી રહ્યા છે એમને કર્મચારીઓનો પૂરો સહयोग છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. Join the world's biggest green run in Vadodara to support a noble cause. It's just few days to go for Green Heartfulness Run. फिट इंडिया मूवमेंट और सेव द एनवायरमेंट को बढ़ावा देने वडोदरा में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का खास आयोजन. 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लीजिए और जीतिए 25,000 तक के इनाम.
Registrations are open. Register now on www.greenheartfulnessrun.com. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के सिनोर के मालसर में नर्मदा नदी के किनारे बनने वाले गजानन आश्रम का शिलान्यास पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों किया गया। वडोदरा जिला के शिनोर के मालसर में नर्मदा नदी के किनारे गजानन आश्रम बनाने की योजना प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया के हाथों किया गया था। आज पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलाश नाथ ने नर्मदा नदी के किनारे आश्रम निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर 5 शिलाओं की पूजा कर विधिवत रूप से स्थापना की गई। करीब 50 करोड़ की लागत से 1,54,000 स्क्वायर फीट में गजानन आश्रम बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर वडोदरा के जिला कलेक्टर विजय शाह, करजन विधायक अक्षय पटेल, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। માલસર ગામ એક પુણ્ય ભૂમિ છે। સદીઓ સુધીનો નર્મદાના ઘાટ ઉપર, નદી ઉપર એક તપોવન છે। ત્યાં ઘણા બધા આશ્રમો છે। એને ભક્તો આખો ગુજરાતમાંથી અહીંયા આવીને મહિના સુધી રહે છે। મારા ગજાનન આશ્રમ સાથે વર્ષો સુધીના સંબંધ છે। એના ગજાનન આશ્રમનો
જે એક્સપેન્શન થાય છે એના અનુસંધાનમાં હું આજે આવ્યો છે. હું માનું છું કે આખું માલસર ગામ જે સિદ્ધોના ગામ જે છે, આ પુણ્યભૂમિ જે છે, એ ધાર્મિક પર્યટનના જગત તરીકે આખા ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત થાય એ તરીકેનો આખો પોટેન્શિયલ ધરાવે છે. એ શિલાઓ જે નર્મદાનો ઘાટ બનશે એ ઘાટમાં ગણેશ મંદિરમાં, ઋષિકુમારો માટેનું શૈક્ષણિક સંકુલમાં, નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓ માટેના સંકુલમાં એ જે પૂજા કરેલી શિલાઓ છે એ અંદર રાખવામાં આવશે. કૈલાસનાથન સાહેબના હાથે જે પૂજા થઈ તે આપણે માલસર તીર્થ ક્ષેત્રની અંદર જો ડેવલપ થશે, ઘાટોનું નિર્માણ થશે તો અનેક પ્રકારની રોજગારીઓ ખુલશે. આ પવિત્ર તીર્થભૂમિની અંદર ભાગવત સપ્તાહ કરવા માટે, ધ્યાન યોગ માટે ભારતભરમાંથી લોકો અહીંયા આવે છે. તો આ સુવિધાયુક્ત બધી વ્યવસ્થાઓ ઊભી થશે તો જે માલસરનો જે વિકાસ થશે એમાં ખૂબ જ ગજાનન આશ્રમનો સિંહ ફાળો રહેશે. તો અહીંયા પરિક્રમાવાસીઓ માટે ચાતુર્માસ ગાળવા માટે બહુ સુંદર વ્યવસ્થા અમે કરશું. એ લોકોને રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા પણ અહીંયા કરવામાં આવશે. સંસ્કૃત પાઠશાળા અત્યાર સુધીમાં 950થી વધારે સંસ્કૃતની અંદર ઋષિકુમારો તૈયાર થઈને ગયા. આવનાર સમયની અંદર ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના પણ જે લોકોને સંસ્કૃત વિષયમાં રસ છે એ લોકો અહીંયા આવી રહેવા જમવા સાથેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. સાથે સાથે એક આધ્યાત્મિક સંકુલ જેમાં પર્યાવરણ, પ્રકૃતિનો બચાવ થાય અને આવનાર સમયમાં બાળકો વ્યસન મુક્ત બને એના પણ અભ્યાસ થાય. સાથે સાથે અમે એક ચિકિત્સાલય એટલે કે દવાખાનાનું પણ વિચાર કરી રહ્યા છીએ કે આ વિસ્તારના લોકોને નિઃશુલ્ક સારામાં સારી સુંદર ડૉક્ટરી સારવાર મળી રહે એના માટેનું પણ અમે આયોજન કરી રહ્યા છીએ. રાજ્યપાલ શ્રી કે કૈલાસનાથન સાહેબ આજે અહીંયા પધારેલા હતા. ગયા અઠવાડિયે આ જગ્યાની અંદર ગજાનન આશ્રમની અંદર ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવરિયા અને અમે બધા સાથે રહીને કર્યું હતું. અને લગભગ અહીંયા આશ્રમનું 50 કરોડના ખર્ચે જે નિર્માણ થવાનું છે એમાં નર્મદા પરિક્રમા કરતા યાત્રાળુઓ માલસર યાત્રાધામ ખાતે સુપ્રસિદ્ધ થાય એવું એમને જે વ્યક્ત કર્યું છે એમનું ધારાસભ્ય તરીકે એમને હું આવકારું છું કે અવાનવા આપણા વિસ્તારની અંદર નર્મદા કિનારાના તમામ યાત્રાધામોનો વિકાસ થાય અને યાત્રાધામની સાથે સાથે પ્રભુ એમને પણ શક્તિ આપે કે આવા વિચારો ધરાવતા તમામ જે અમારા જે कैलाशनाथन साहेब से एमने प्रभु काम करवानी शक्ति आपे. गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के किनारे आयोजित होने वाले कार्तिक महीने की पूर्णिमा के लोक मेला का प्रारंभ हुआ है. पाटन जिला के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के किनारे हर वर्ष पारंपरिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा का भव्य मेला आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत हो गई है. इस मेले में 10 से 12 लाख लोग हर साल शामिल होते हैं, जिसके चलते यहाँ प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है. गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री और सिद्धपुर के विधायक बलवंत सिंह राजपूत के हाथों लोक मेले का लोकार्पण किया गया है. पितृ और मातृ तर्पण तीर्थ के रूप में सिद्धपुर काफी प्रसिद्ध है. सरस्वती नदी के किनारे पितृ तर्पण करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं. इस वर्ष भी इस मेले में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. સિદ્ધપુરનો કાર્તકનો મેળો એ માત્ર સમગ્ર ગુજરાત સમગ્ર ભારતમાં પ્રસિદ્ધ છે. એનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે અહીં આગળ ત્રણેય નદીઓ ગંગા, જમુના, સરસ્વતીનું સરસ મિલન થાય છે. વર્ષોથી પરંપરાથી કલ્પના ના શકાય આ મેળાનું આયોજન થાય છે. એની અંદર ધાર્મિકતા જે આપણી છે ધાર્મિકતા મુજબ આ દિવસે સ્નાન થાય, આપણા દીવડા ભક્તાને એનું પુણ્ય અનેક પ્રકારનું આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે અને પ્રમાણે પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આપણે જોયું છે કે અહીં આગળ એક દિવસે સ્નાન થાય મા સરસ્વતીનું તો એના જેટલા પાપો હોય એ પાપોમાંથી મુક્ત થાય એ પ્રકારની આપણી પરંપરા ચાલે છે. અનેક લોકો, લાખો લોકો આવીને અહીં આગળ સ્નાન કરે છે. નદીમાં જે વ્યવસ્થા છે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ એના પર પાણી છોડીને પણ લોકો કરતા હોય છે. એ સાથે સાથે કાર્તકના મેળાનું પણ એક સરસ આયોજન થતું હોય છે. આ ફેર ગુજરાત સરકાર તથા નગરપાલિકાએ ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા કરી છે. એ બધા સરકારનો અને નગરપાલિકાનો ખૂબ આભાર માનું છું.
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ऊना तालुका के भाचा गांव में श्री मारो कुम्हार समाज द्वारा 32वां सामूहिक विवाह आयोजन किया गया। ढड़ा तालुका में मूल 12 गांव में खेती और छोटा बड़ा बिजनेस कर बसने वाले और अब दीव, सूरत, मुंबई, वापी, वलसाड़, यूके में बसे श्री मारो कुम्हार समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस 32वें सामूहिक विवाह में 26 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। समाज के अग्रणियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेता भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। इस आयोजन में श्री मारो कुम्हार समाज के दाताओं का कन्यादान में काफी आर्थिक सहयोग रहा। હું સમગ્ર મારું કુમાર સમાજ પરિવાર વતી સ્વાગત કરું છું। પ્રોફેસર કાળુભાઈ ટાચરને એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ। એમને એમની હૃદયની ઉર્મિઓ કીધી। બીજું સમાજની અત્યારે બહુ ગંભીર ચિંતા છે। કુમાર સમાજ પરિવાર વતી સ્વાગત કરું છું। देव दिवाली के पावन अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम शामला जी में कालिया ठाकुर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कार्तिक महीने की पूर्णिमा यानी भगवान की दिवाली, देव दिवाली के पावन अवसर पर यात्रा धाम शामला जी में कार्तिक महीने की पूनम पर मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ शामला जी में विराजमान भगवान गदाधर सावरिया के दर्शन के लिए सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें लग गई हैं। कालिया ठाकुर के दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। इस मौके पर भगवान शामलिया को खूबसूरत रूप से सजाया गया। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के मेले में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और समूचे गुजरात से भक्त आते हैं। यहाँ मेश्वर नदी किनारे पर स्थित पवित्र नागधरा कुंड में स्नान कर पितृ तर्पण की अनोखी महत्ता है। देव दिवाली पर भक्तों ने कुंड में स्नान कर भगवान कालिया ठाकुर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शामळाजी में कार्तिक सुद पूनम मेळो मोटाમાં મોટો અહીંયા ભરાય છે। અરવલ્લી જિલ્લાના અંદર ના શામળાજી ના નાગધરાના કુંડ ઉપર અહીંયાથી કેટલાય શ્રદ્ધાળુ દૂર દૂરથી નાહવા માટે આવે છે। અહીંયા નાઈ અને પિતૃઓને પિંડદાનની વિધિ, અસ્થિ વિસર્જન, પિતૃદોષની પૂજાઓ કરાવે છે। અહીંયા નાઈ અને વસ્ત્ર છોડીને પોતાના વતન બાજુ જાય છે। આ કુંડનું મહત્વ એ છે કે અહીંયા સદીઓથી સ્નાન કરવા માટે પિતૃઓની મોક્ષ ગતિ મળે છે। આ કુંડ પર નાહવાથી અહીંયાથી આવે છે, એમપીથી આવે છે, દાહોદથી આવે છે, અરવલ્લી જિલ્લો, સાબરકાંઠા જિલ્લો, પંચમહાલ જિલ્લાના હરેક ગામોમાંથી અહીંયા લોકો સ્નાન કરવા માટે આવે છે। ગુજરાતનું પવિત્ર તીર્થ યાત્રાધામ શામળાજી દેવ ગદાધર ભગવાન સાક્ષાત ચમત્કારિક દૈવી શક્તિનો અવતાર છે। ગુજરાતભરની અંદર આવેલા દ્વારિકા, ડાકોર અને શામળાજી આ ત્રણેયની અંદર શામળાજી મંદિર પણ સાક્ષાત કાલિયા ઠાકોરની હાજરી આપણને ખૂબ જ આનંદ અને અભિનંદન અપાવે છે। આદિવાસી વિસ્તારની અંદર અરાવલી જિલ્લાના ડુંગરોની અંદર હરિયાળી લીલી છાવણીની અંદર બિરાજમાન શ્રી શામળિયા ભગવાન સર્વેની મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ કરતા હોય છે। સ્પેશિયલી તુલસી વિવાહના દિવસથી અહીંયા ભવ્ય મનોરથનો કાર્યક્રમ થયો છે। તુલસી વિવાહના દિવસે શામળિયા અને તુલસીજીના લગ્નના શુભ પ્રસંગથી માંડીને આજે દેવ દિવાળીના દિવસે લાખોની સંખ્યાની અંદર ભાવિક ભક્તોની મેદની હાજરી આપીને પોતાની ધન્યતા અનુભવે છે। જે પણ ભાવિક ભક્તને પોતાની માનતા હોય, પોતાની ઈચ્છા હોય, પોતાની મહેચ્છા હોય અને પોતાના સર્વ કાર્યોને સિદ્ધ કરવાની જે શક્તિ અને સ્વપ્નો દર્શાવતા હોય એ સાક્ષાત કાલિયો ઠાકર, સાક્ષાત શામળિયો તરત જ પરચો આપીને સર્વ યાત્રાવૃંદને પોતાની ધન્યતા અનુભવે છે। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा विश्व डायबिटीज दिवस के मौके पर राज्य में 45 जगह पर 15 दिवसीय योग शिविर आयोजित किए गए। गुजरात राज्य में विश्व डायबिटीज दिवस से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 45 जगह पर योग द्वारा डायबिटीज मुक्त गुजरात अभियान का आयोजन किया गया। वडोदरा में भी 3 जगहों पर यह आयोजन हुए हैं, जिसके तहत 300 से ज्यादा लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लेते हुए अपने आप को स्वस्थ रखने की पहल की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर की शुरुआत और आखिरी दिवस पर डायबिटीज चेकअप कैंप का आयोजन भी किया गया।
राज्य सरकार के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा योग से डायबिटीज निवारण कार्यक्रम अंतर्गत रिसर्च डाटा भी तैयार किया जाएगा, जो डायबिटीज से पार पाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मस्त रहेंगे, करो योग, रहो निरोग, घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। देव दीपावली के पावन अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम पावागढ़ और ताजपुरा के नारायण धाम में अन्नकूट के दर्शन का आयोजन किया गया। आज देव दीपावली का पावन अवसर है और देव दिवाली के मौके पर यात्रा धाम पावागढ़ में अन्नकूट के दर्शन का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा देव दिवाली के शुभ दिवस पर महा अन्नकूट आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर अन्नकूट के दर्शन का लाभ लिया। देव दिवाली के पावन अवसर पर पावागढ़ में भक्तों का हुजूम देखने मिला। गुजरात के प्रसिद्ध नारायण धाम में भी देव दिवाली पर अन्नकूट के दर्शन का आयोजन किया गया। ताजपुरा में स्थित नारायण धाम भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां अन्नकूट के दर्शन करने बड़ी संख्या में भाविक भक्त पहुंचे। श्री नारायण आरोग्य धाम अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा यहां अन्नकूट का आयोजन किया गया। यहां बापू की अनुपस्थिति में भी भक्तों की प्रचंड आस्था देखने मिल रही है। यहां अन्नकूट के साथ साथ महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के कुबेर भंडारी मंदिर में देव दीपावली पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। देवों के कोषाध्यक्ष के रूप में कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। वडोदरा जिला के डभोई में कुबेर भंडारी का मंदिर है और सालों की परंपरा के तहत देव दिवाली के दिन सोमनाथ भगवान को हिसाब दिखाने के लिए कुबेर भगवान शोभा यात्रा निकाल कर पहुंचते हैं। इसी के तहत कुबेर भंडारी मंदिर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सोमनाथ मंदिर पहुंची। भगवान कुबेर ने वहां सारे हिसाब किताब दिखाए और निज मंदिर वापस आए। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भाविक भक्त भी शामिल हुए। कुबेरेश्वर महादेवनी वर्षोथी प्रणालिका छे। कुबेर दादा भगवानना खजांची छे, पैसाना मालिक छे અને આજ ગામમાં આવેલું સોમનાથનું મંદિર, એ સોમનાથ એ રાજા છે। દેવ દિવાળીના શુભ પ્રસંગે વર્ષના અંતે નવું વર્ષ શરૂ થાય પહેલાં હિસાબ બતાવવા ખજાનચી રાજાને જાય છે। એ પ્રણાલિકાના ભાગરૂપે કુબેર ભંડારી ટ્રસ્ટ તથા ગામના લોકો, કારણ કે આ ગામનો વરઘોડો છે, ગામના લોકોનો ઉત્સાહ વર્ષોથી થાય છે। કુબેરથી નીકળી ગામમાં બે ચાર જગ્યાએ પોરો ખાઈ સોમનાથમાં પૂજા કરી, સોમનાથ ભગવાનને ચોપડાને હિસાબ બતાવી અને પછી પરત ફરે છે। એ છે આજની પ્રણાલિકા। गुजरात के आदिवासी नेता चातर वसावा ने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन का ऐलान किया है। गुजरात के नर्मदा जिले के देड़ियापाड़ा में आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी नेता चातर वसावा भी मौजूद रहे। समाज के लोगों की भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चातर वसावा ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी अग्रणियों के साथ मिलकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा नामक संगठन का ऐलान किया, जिसकी राजधानी केवड़िया होगी। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा 150મી जन्म जयंती છે અને આ જન્મ જયંતી જ્યારે અમે ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે આદિવાસી સમાજ એ દેશની આઝાદીમાં પણ ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે। દેશ આઝાદ થયા પછી પણ દેશના વિકાસમાં
જ્યાં પણ એ ડેમો બનતા હોય, હાઈવે નીકળતા હોય, રેલવે સ્ટેશનો બનતા હોય, બુલેટ ટ્રેન નીકળતી હોય કે જ્યાં પણ આદિવાસીઓની જમીનની જરૂર પડી છે, દેશના વિકાસમાં જમીનો આપી છે. પણ જ્યારે આદિવાસી સમાજની વિકાસની વાત આવે છે ત્યારે આદિવાસી આજે પણ શિક્ષકો માટે આંદોલન કરે, શાળાઓ માટે આંદોલન કરે, સારા ડોક્ટરો માટે આંદોલન કરે, સારા દવાખાનાઓ માટે આંદોલન કરે, સિંચાઈના પાણી માટે, પીવાના પાણી માટે આંદોલન કરે, પોતાના જળના અધિકારો માટે આંદોલન કરે, સંવિધાનિક માટે આંદોલન કરે. તો ક્યાં સુધી અમારે લડેંગે જીતેંગે જિંદાબાદ મુર્દાબાદ કરવાનું છે? ત્યારે આજે અમે ગુજરાતના, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના તમામ આગેવાનો સાથે મળીને ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચા સંગઠન અમે જાહેર કર્યું છે અને આજેથી કાઉન્ટડાઉન ચાલુ થાય છે. અમે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચા અંતર્ગત અમારું વિશાળ સંગઠન બનાવીશું અને જનજાગૃતિ સાથે અમારા સામાજિક અધિકારો, બંધારણીય અધિકારો મેળવવા માટે આવનારા દિવસોમાં અમે સરકાર સામે આવીશું. સાથે સાથે જો સરકાર અમારા આદિવાસીઓનો વિકાસ નહીં કરવા માંગે તો અમે આવનારા ભવિષ્યમાં દેશનું 29મું રાજ્ય અલગ એટલે કે ભીલ પ્રદેશ રાજ્યની માંગણી કરીશું અને એની રાજધાની અમે કેવડિયા बनाવીશું. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके सामने 24 घंटे उपलब्ध हैं. देखते रहें VNM टीवी. नमस्कार.